Okay, so today's chapter is agricultural income, and the definition of agricultural income is given under section 2 subsection 1a. So the Income Tax Act has its own definition of agricultural income, which consists the following three main activities. So in short, any income is called agricultural income if it is covered under the following three sections. So क्या section है? First is rent or revenue brought from agricultural land situated in India. So it means in case any rent or revenue is derived from land which is situated in India and is used for agricultural purposes. So if this is the condition, we say that the income is agricultural income. So the conditions under this section is rent or revenue should be derived from land. It could be in cash or it could be in kind, but it should be derived from the land. The second important condition is that the land is one which is situated in India. It means if a land is situated in a foreign country, then this condition is not satisfied and will not say that it is a agricultural income. The third important condition is that the land is used for agricultural purposes. Okay, if it is not used for agricultural purposes, then it is not a agricultural income. And the next important condition is that if rent is non-monetary in nature, okay, when it is in kind, then the market value of the product is regarded as agricultural income. So these are the rules and the conditions in which we will consider whether the income is agricultural income under this rent or revenue or not. But in case if any product is sold under this at a profit, then this profit will be called as business income. In short, अगर आप agricultural produce कर रहे हो, जो भी आपको agricultural produce करके जो income आ रही है, that is agricultural income. But अगर आप market में उसे as a profit बेच रहे हो और आपका काम है कि आप एग्रीकल्चरल इनपुट्स को प्रॉफिट बना के बेचते हो, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस इनकम एंड नॉट एज अ एग्रीकल्चरल इनकम. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ योर एग्रीकल्चरल इनकम, दैट इन केस रेंट और रेवेन्यू इज गॉट फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड. सो जैसे काफी बार होता है ना, द मैन्युफैक्चरर हैज गिवन हिज लैंड टू समवन एल्स एंड द अदर वन इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग इट ऑफ. सो जो भी आपको रेंट और रेवेन्यू आ रहा है वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम होता है. बट हाँ, अगर आप उसके प्रोड्यूस को प्रॉफिट में बेचोगे, बिना प्रोड्यूस करे उसको अगर मार्केट में बेचोगे, तो फिर वो आपकी बिजनेस इनकम है, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है. एग्रीकल्चरल इनकम उसी की होती है जो उसको प्रोड्यूस करके बेचता है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन द फॉलोइंग वेज. सो एग्रीकल्चर जो मीनिंग एग्रीकल्चर का था वो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं हुआ है, बट ड्यू टू वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स by the Supreme Court or by the High Court, it basically provides us as a guide that how we can ascertain whether this activity is agricultural activity or not. So इसमें एक important case है आपका Commissioner of Income Tax versus राजा बिनोय कुमार साहस रॉय. ये केस आपके सिलेबस में भी है. As per this case, एग्रीकल्चर मीनिंग को डिफाइन किया गया और उसको कि ये बोला गया कि it basically consists of two type of operations, बेसिक ऑपरेशंस एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस. एग्रीकल्चरल इनकम आपका कोई ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बट आपकी थ्योरी आ सकती है. एंड थ्योरी में दिस पर्टिकुलर केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्रीकल्चर इस केस के थ्रू डिसाइड हुआ था कि इट कंसिस्ट ऑफ टू ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस. तो आपके बेसिक ऑपरेशंस वो सारे होते हैं दैट हैपेंस प्रायर टू द जर्मिनेशन ऑफ योर whatever the seed or plant you are going to sell off later. So prior to this, all the activities that is which are essential for the seed to grow, जैसे आपके सारे cultivation of land, consequently tilling of the land, sowing of seeds, planting, and all such operations that require human skills and efforts directly to the land itself.
जो भी बेसिक ऑपरेशंस चाहिए होते हैं आपको सीड को उगाने के लिए, वो सारे आपके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं. Subsequent operations होते हैं, these are basically to carried out for growth and preservation of the produce. ठीक है, so that you will be do all such activities in order to make the agricultural product fit for the use in the market. राइट पहले आप उगाते हो, उसके बाद आप जब बेचने के लिए जब वो सारे ऑपरेशंस होते हैं, वेदर यू वांट टू प्रिजर्व इट और यू वांट टू make further growth enhancements to that product, so all these activities are called your subsequent operations. So जो भी आपके दोनों operations होते हैं, they combinedly called as the agricultural as the meaning of this agriculture. ये दोनों operations आपके consider होते हैं. ठीक है, तो भले ही आप उगाओ मत, बट अगर आप मार्केट के लिए फिट कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, तो दैट विल कम अंडर दी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, और वो आपका एग्रीकल्चर की मीनिंग में ही आएगा. ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट इज एग्रीकल्चर नॉट merely include food and grains. So it is not just confined merely to the production of foods and grains, but it also comprises all the products of the land which have some utility, either for the consumption or for the trade, and would also include forest products. एक मिनट चुप हो जाओ. Forest products as well. तो आपके इसमें खाली यही नहीं है कि आपको foods and grains करने हैं, but जो भी लैंड से जो भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आप निकाल सकते हो, ऑल आर इंक्लूडेड. 1 minute. fall under the meaning of the agriculture. So जो different type of activities होती है, which has just the connection with land. Just a minute. ठीक है, जैसे लैंड में आप कुछ भी प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल आपने कोई लाइव स्टॉक रखा हुआ है अपने पास, और वहां से जो भी आपको प्रोडक्ट मतलब फॉर एग्जांपल कोई मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो आप लोग, तो उसकी जो भी काइंड ऑफ एक्टिविटी होती है, वट एवर द ट्रेडिंग, इट विल नॉट फॉल अंडर द एग्रीकल्चर, बिकॉज अगर लाइव स्टॉक आपकी जमीन पे है, तो वो जमीन का सिर्फ कनेक्शन है, आ नहीं रहा है. ठीक है, सो जब भी जमीन से आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तब तक वो एग्रीकल्चर की मीनिंग में नहीं आएगा. ठीक है, सो ऑल योर एक्टिविटीज लाइक ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड डेयरी फार्मिंग, दीज आर नॉट considered as agriculture. ठीक है, so this is the second main important point. Then under this, second one is true performance of a process by the cultivator or the receiver of rent in kind that results in the agriculture produce being fit to be taken to the market. So such processes which involves manual or mechanical operations that are ordinarily employed to make the agriculture produce fit for the market and the original character of such produce is retained, it will fall under this your second definition. So अब हमारी second definition में हमने अभी agriculture की मीनिंग को डिस्क्राइब किया है, देन ऑल द परफॉर्मेंसेस ऑफ द प्रोसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड in order to make the product fit for the market, and the third one is through sale of such agricultural produce. So where the produce does not undergo ordinary process employed to become marketable, the income arising on sale would generally be partly agricultural income and partly will be non-agricultural income. So अगर कुछ भी ऐसा आपका होता है कि when you are producing your product and some it is related with the agriculture and some it is not, then in case it will fall under the combination of your partly from agricultural income and partly for non-agricultural income, and the income tax has prescribed the rules to make the bifurcation regarding these
agricultural and non-agricultural products like for tea, coffee, rubber, etc. So this we'll discuss about the rule कि जब आप टी, रबर या कॉफी कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हो तो क्या रूल होता है जिसके अकॉर्डिंगली यू डिसाइड दैट दिस पार्ट बिलोंग्स टू द एग्रीकल्चरल इनकम and this part belongs to the non-agricultural income. Then the third important definition is income derived from farm building required for agricultural operations. So this is the third important definition. ठीक है, हमने 3 definitions करी है. This is the third one, जिसके accordingly we decide whether it is an agricultural income or not. So what all are the conditions? First condition is that the building should be on or in immediate vicinity of the agricultural land and is one which the receiver of rent or revenue or the cultivator by reason of his connection with the land requires the building as a house to stay or as a storehouse or uses it for these kind of situations. So in short, if farmhouse is situated on agricultural land, okay, then rental income from such farmhouse is also regarded as agricultural income. ठीक है, फार्म हाउस किस लिए बिल्ड किया है एग्रीकल्चरल लैंड पे? इन ऑर्डर टू स्टे और एज अ स्टोर हाउस और यूज इट फॉर दीज काइंड ऑफ. सो अगर वहां से कोई भी इनकम डिराइव्ड हो रही है, वेदर इट इज रेंटल इनकम और एनी अदर काइंड ऑफ अ रेवेन्यू, तो वो भी आपका एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है. But there are certain conditions which are attached to it. So first condition is that land is assessed by either land revenue or a local rate assessed and collected by government offices. So जो land है, जो agricultural land है जिस पे farm house is constructed, that should be assessed either by the land revenue or at a local rate assessed and collected by government officers. And in case it is not so, then the land should not be located within the following regions. Should not be located, ये जो आपके regions है, these are basically your urban areas. ठीक है, so अगर उनका distance, अगर population as per the preceding census, if it is 10,000 to 1 lakh, then within 2 kilometers में land नहीं होनी चाहिए. If the population of the city is within 1 lakh to 10 lakhs, then within 6 kilometers में नहीं होना चाहिए. And if the population is greater than 10 lakhs, then within 8 kilometers. तो आपका बेसिकली वहां पे आपका फार्म हाउस सिचुएटेड नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ पे सिचुएटेड है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी, और अगर यहाँ पे सिचुएटेड है बियॉन्ड दैट अगर सिचुएटेड है तो फिर वो मानी जाएगी. ठीक है, सो दीज आर द 2 एडिशनल कंडीशंस व्हिच आर अटैच्ड, कि या तो लैंड रेवेन्यू उसको असेस करे या लोकल रेट से असेस हो या फिर collected by government officers or whatever the land on which the farmhouse is constructed. और अगर ये सब नहीं है तो you have to check that the land should not be located within these following regions. और municipality includes your municipal corporations, notified area committee, town area committee, town committee and containment board. So this is the definition of your municipality. So ये सारे distance है, ये आपको as it is learn करने हैं. ठीक है, and even where the local population is less than 10,000, the land should not be situated within the jurisdiction of the local municipality or containment board. So this is the condition, and this is basically a condition that your land should not be in the urban area. Basically it should be in the rural area in order to claim that whatever rent you are getting from that farmhouse, it is agricultural income. ठीक है, उसको क्लेम करने के लिए आपका इन एरियाज में नहीं होना चाहिए. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. इन केस where the activities have only some distant relation to land like dairy farming, breeding, rearing of livestock, poultry farming, they do not form part of the agricultural income. This is very important. Sometimes question में ऐसे mention हो जाते हैं, but आपके BCom honors में there is very less possibility of any practical question to come up from this particular chapter. But yes, आप बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो उसमें आ सकता है ऐसा कुछ. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर दिस इज, अब हमने तीनों कंडीशंस कर ली हैं जिसकी वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर दिस इज एन एग्रीकल्चरल इनकम और नॉट. पहली थी हमारी एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड व्हिच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस.
ठीक है, कि भले ही हम खुद नहीं प्रोड्यूस करते बट हमने लैंड किसी टेनेंट को दी हुई है और उससे हमें रेंट या रेवेन्यू आ रहा है, तो वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम होगा तभी व्हेन इट इज सिचुएटेड इन इंडिया और इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। सेकंड है आपका इनकम डिराइव फ्रॉम लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। The producer or the owner of the land is the producer himself and he is producing the product, and in that case also it will be considered as the agricultural income. And the third one that we have done is the income from farmhouses. Okay, so this is the meaning of your agricultural income. The next important concept under this is composite income from agricultural and business. So if a person is doing composite income क्या होती है? When the person is involving in an activity which is consisting of both the agriculture and business. मतलब वो agriculture produce भी कर रहा है at the same time वो उसी से regarding कोई business भी कर रहा है. So उसमें आप कैसे उसको bifurcate कर सकते हो कि what is the agricultural income and what is the business income? So this is the rule which I have already told you, that regarding to the tea, rubber, coffee and coffee grown, cured and roasted and grounded, इन सबके ये आपके परसेंटेजेस है. दिस इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन योर इनकम टैक्स कि टी के केस में एग्रीकल्चर 60% होगी विच इज द एग्जेम्प्ट पोर्शन and 40% will be the non-agricultural, and non-agricultural portion means it is taxable in your act. ठीक है, सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम ही है जो आपकी एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो टैक्सेबल है. तो ये रेशियोज ऑलरेडी गिवन है आपकी आईटी एक्ट में. दैट इज फॉर रबर इट इज 65%, 35%, for coffee it is 75%, 25%, and for coffee grown, cured, then roasted and grounded it is 60 and 40%. Now suppose this is your example that Mr. X is a agriculture in Assam where he grows and manufactures tea. ठीक है, टी वाला concept है. During the financial year 1920 he produced tea amounting to rupees 12 crores. How much will be the taxable turnover for assessment year 2021? So we know that the Income Tax Act provides that 60% shall be exempt from tax. So 60% of 12 crores is 7.2 crores. So this will be exempted, and the rest, that is 4 crore 80 lakhs will be taxable. And this is the annual turnover. This is basically his business income. ठीक है, और हम जब पीजीबीपी करेंगे then you will realize how we can calculate the taxes on the business incomes. ठीक है, so जब क्वेश्चन में जब कभी भी टी, कॉफी, रबर या लास्ट जो कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड का कंसेप्ट आता है तो उसमें आपको ये सारे के सारे अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे कि कौन सा पोर्शन आपका एग्रीकल्चरल है और कौन सा आपका नॉन एग्रीकल्चरल है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करोगे. तो एज पर योर सिलेबस उसमें लिखा हुआ है कि इन सबके रेट्स बच्चों को पता होने चाहिए. ठीक है, सो ये आप अच्छे से याद कर लेना. अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Any doubts to anyone? मैम हम टैक्सेस रेवेन्यू पर लगाएंगे या फिर प्रॉफिट्स पर लगाएंगे? इसमें तो बेटा वैसे प्रॉफिट्स पे लगेगा आपका. ये क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए था. वैसे प्रॉफिट्स पे लगेगा क्योंकि अभी मैं जब नेक्स्ट आपको कराऊंगी उसमें मैं आपको बता दूंगी कि प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं. सो प्रॉफिट्स पे लगता है क्योंकि हम जो भी कॉस्ट ऑफ whatever the raw material, that whatever the overheads that we have incurred, that is allowed to be reduced. ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा उस पे होगा. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ये क्वेश्चन कि 60% ऐसे होगा, 40%, बट टर्नओवर पे नहीं लगता. दैट इज राइट, आपका प्रॉफिट पे लगता है. सो अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही चेंज कर दें कि उसका प्रॉफिट 12 करोड़ था तो वो उसके अकॉर्डिंगली बाइफरकेट हो जाएगा. क्लियर है? यस मैम. चलो, नेक्स्ट इज regarding to the taxation of agricultural income. So as we have already discussed, agricultural income is exempt from income tax. However, the Income Tax Act has laid down a method to indirectly tax such income. And how we can indirectly tax it?
This is called as partial integration of agricultural income with non-agricultural income. It basically means that the government, what they do, they tax the non-agricultural income at a higher rate of tax. ठीक है, जिससे क्या होता है, they kind of set off between the exemption that they have given for the agricultural produce. क्योंकि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट ही होती है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है फॉर हायर प्रोड्यूसर्स कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को ज्यादा हायर रेट पे टैक्स करती है, जिससे वो थोड़ा बहुत कंपनसेट कर लेती है जो उन्होंने एग्जेम्पशन दी होती है. सो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं. कंडीशंस क्या हैं आपकी? ऑल इंडिविजुअल्स, Hindu undivided families, association of persons, body of individuals and artificial juridical person have to compulsory calculate their taxable income using this method. Method abhi discuss hoga, but for these it is very much compulsory that they have to calculate their agricultural and non-agricultural income using this method. However, the company, firms, your limited liability partnerships, cooperative societies and local authorities are excluded from this method. So this is applicable only for these types of assessees: individual, HUF, AOP, BOI and artificial juridical person. Next important condition is that the net agricultural income is greater than 5,000 during the year. If it is not greater than 5,000 during the year, तब आपको ये concept utilize नहीं करना है. When it is greater than 5,000, then only we'll calculate this partial integration of agricultural and non-agricultural income. The next is non-agricultural income is greater than rupees 2,50,000 for individual below 60 years of age and all other applicable persons. So this is basically your exemption. ये जो आपका first slab है ना, which is exempted, वो 60 to 80 years में 3 lakhs and above 80 में 5 lakhs. So अगर इससे एक्सीड करती है तभी आप पार्शियल इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज नहीं. These are the 3 important conditions. So in simple terms, the non-agricultural income should be greater than maximum amount not chargeable to tax as per the slab rates. So कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? First step is the difference between cost of cultivation and the fair market value of the agricultural product will be taken as agricultural income. So जो भी आपको cost of cultivation includes your whatever cost that you have incurred in order to make that product fit for the market. So it will be all the raw materials, all the overheads cost, all other expenses. It could be transportation expenses, anything. So whatever the cost which is involved in order to make the product fit for the market to sale, this is your cost of cultivation. So उससे आप माइनस कर उसमें किससे माइनस करोगे? फेयर मार्केट वैल्यू. जो भी उस टाइम जो उसने प्रोड्यूस किया है उसकी जो फेयर मार्केट में वैल्यू है, that you will subtract this cost of cultivation, you will subtract from that value and that will be taken as the agricultural income, and this income is exempt. The next important step is the market value of the agricultural product which is used as raw material is taken as cost of raw material. So जो भी आपने raw material, for example किसी ने जैसे अभी हम example करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा. जैसे किसी ने कुछ सिल्क प्रोड्यूस किया, सिल्क उसका रॉ मटेरियल था, बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग द सिल्क व्हाट ही हैज डन, ही हैड मेड अ साड़ी फॉर दैट, फ्रॉम दैट सिल्क. उसने सिल्क को ना बेच के साड़ी बनाई उस सिल्क से, और उसको जब उसने बेचा तो वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो भी उसका रॉ मटेरियल लगा था उस सिल्क को बनाने में, वो उसका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि उसने फर्स्ट प्रोसेस पे ना बेच के उसने सेकंड प्रोसेस पे और उसे फाइनल प्रोडक्ट बना के उसने बेचा है, तो उसका कॉस्ट जो उस टाइम उस सिल्क की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो उसकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगी. ये भी आपको एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा. एंड अदर ओवरहेड्स एंड एक्सपेंसेस विल आल्सो बी एडेड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और जब आप इस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम द सेल प्राइस ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज योर बिजनेस इनकम. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली इन रिलेशन टू द प्रोड्यूसर who is producing certain product, and at the end of the day he is using that product as a raw material in order to make a final product, और final product जब वो बेचेगा, so this is the integration of your agricultural and non agricultural income, क्योंकि कुछ आपका इसमें business part involved है.
सो उस केस में दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। तो इन स्टेप्स को अभी समझेंगे तो बहुत ही आसान है ये। सो फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज अ फार्मर who grows tomatoes on his land at the cost of cultivation of rupees 3 lakh. So उसका 3 लाख कॉस्ट लगती है उसको और वो टमाटो ग्रो करता है। The crops has fair market value of 7 lakhs. ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू एंड टमाटोज की 7 लाख, बट it is not sold in the market but it is used as a raw material for the production of tomato ketchup. ठीक है, वो टमाटो सिर्फ इसलिए ग्रो कर रहा है so that it will used as an ingredients in making the tomato ketchup. Other overheads and expenses are rupees 5 lakhs. So we have to calculate the taxable income of Mr. X. Selling price of tomato ketchup is rupees 20 lakhs. So this is basically the integration of your agricultural and non-agricultural income. So सबसे पहले हम agriculture निकालेंगे. So tomatoes की cost कितनी थी? 3 लाख और उनकी fair market value की थी और they are not being sold but उनकी market value क्या थी? 7 lakh. So 7 lakh minus 3 lakh 4 lakh. This is entirely exempt from your income tax क्योंकि ये आपकी agricultural income है। दूसरी आती है अब आपकी business income. So business income में सबसे पहले आता है cost of raw material. So actual में आपका cost of cultivation 3 लाख की था but हम cost of raw material लेंगे उसकी उस टाइम पे market value क्या थी? So market value उसकी 7 lakhs थी, 7 lakhs. Other overheads and expenses are 5 lakhs, so total cost is 12 lakhs. Selling, जो उसकी sale consideration है, this is 20 lakhs. So 20 minus 12, it is 8 lakhs. So this is your PGBP income, and this will be taxable. ठीक है, आपकी agricultural income is exempted, but your income is taxable. तो आपकी total taxable income is 8 lakh of rupees. So this is the concept of your partial integration. ठीक है, इट इज क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है किसी को? Ma'am, this will only happen when there will be a bifurcation that this income is not used, this product is not used for agriculture. Like we have like that he said that it is not used for the agriculture purpose, but it is used for the tomato ketchup production. Right. So whenever there is a person who is involved in such kind of activity where he is producing certain kind of agricultural product, हमने agriculture की definition कर ली कि वो कैसे produce होता है, basic operations and subsequent operations के through, और mere connection of land is not required, मतलब is not this compulsory in order to treat the product as agriculture. ये भी हमने कर लिया कि agriculture मतलब land से ही कुछ निकलना चाहिए। तो उस केस में अगर कोई प्रोड्यूसर है जो वो प्रोड्यूस करके वो अपने उसको एज अ रॉ मटेरियल अपने किसी और गुड में, फाइनल गुड में यूज कर रहा है, सो उस केस में पार्शियल इंटीग्रेशन कंसेप्ट आएगा। बट उस केस में भी देयर शुड बी एटलीस्ट दीज कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। जो आपकी 3 कंडीशंस है ना, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है then you will not bifurcate those amounts and everything will be this business income. उस केस में आपकी एग्रीकल्चर इनकम को डिवाइड नहीं किया जाएगा, बाइफरकेट नहीं किया जाएगा अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। सो जो भी इनकम होगी दैट विल बी इंटायरली टैक्सेबल। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बाइफरकेट दोज अमाउंट्स, एंड बाइफरकेट के बाद यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, सो जब भी क्वेश्चन में अगर वैसे आपके बीकॉम ऑनर्स में नहीं आएगा मोस्ट लाइकली, बट आपका ये कंसेप्ट यही कहता है कि अगर जैसे हमने जो 3 एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशंस की थी, जिसमें से सेकंड वन वही वाली थी कि अगर लैंड प्रोड्यूसर ही यूज कर रहा है, मतलब ओनर है और वही प्रोड्यूस कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, और उस केस में अगर वो कुछ सेल ऑफ कर रहा है उस पर्टिकुलर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको एज अ रॉ मटेरियल करके कुछ फाइनल गुड बना के कुछ बेच रहा है, तो उस केस में वो पार्शियल इंटीग्रेशन कंसेप्ट आ जाएगा अगर उसकी जो इनकम है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वो 5,000 से ज्यादा है और उसकी एग्जेम्पशन से भी ज्यादा है। ठीक है, यूजुअली आपके एग्रीकल्चर इनकम में वो केस लॉ आ सकता है, या फिर आपके बेसिक ऑपरेशंस एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, या फिर टी और रबर और कॉफी, इनके क्या टैक्स रेट्स हैं।
इससे ज्यादा आपके सिलेबस में ही नहीं है एग्रीकल्चरल इनकम का।